हेलो फ्रेंड्स, सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा आयोजित कोर्स है हमारे सीपीटी के जो 5 कोर्स है। इसमें फर्स्ट कोर्स है साइबर हाइजीनिक प्रैक्टिस पर्सनल डिजिटल डिवाइस। जब आप दीक्षा कोर्स का खोलोगे तो माई कोर्स जब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कोर्स दिखाई देगा। फर्स्ट हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आपको सभी मॉड्यूल्स को 1 बाय 1 करके ओपन करना है और कंप्लीट करना है। लास्ट में असेसमेंट है। इस असेसमेंट के कुछ के आंसर हम आज करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are true? Correct answer: any information stored on a USB device should be backup. Next question, in the terms of security, what is the best way to protect data stored on your device USB drive? Correct answer: encrypt the data. Next question number third, what action can help to get your device back if they get lost or stolen? Correct answer: enable device tracking. Next question, in which of the following situation the email attachment cannot be opened? Correct answer: D option. Number. The email attachment is the from somebody you do not know, but it is an executable file as attachment. Next question, on most home computer, how often should you update your operating system and security software? Correct answer: as in when update is received. Next, a dash attachment attack attempt to render a machine or network resources unavailable to its intended users by temporarily distributing service of a host connected to the internet. Correct answer: denial of service. Next, which of the following software program would not help you to in protecting your computer? Correct answer: shopping apps. Next, a dash is a process where the user provide to different authentication factors to variety themselves to computer complete the transaction or login to an account. Correct answer: the option two-factor authentication. Next, enable dash features to increase the security of all the devices that use in your home. Correct answer: both privacy and security. Next, which option is not a good trade for your password? Correct answer: your name used as password. Next, which of the following is an example of a biometric ID? Correct answer: fingerprint. Next, what is the another terms for a smart home? Correct answer: home automation. Next, when you boot up your operating system or log on to your computers, some program run automatically without any action on your part. What are these program called? Correct answer is C option: startup program. Next, Ira receive an email with the subjects $5 million donation from Bill Gates, and in the email they ask her to provide her mobile number and banking detail and also forward the mail to 25 friends to claim the money. What is the best action that should be performed by Ira? Correct answer: A option: report the email as spam and delete it. ये थे हमारे यहाँ पर 14 क्वेश्चन। इसमें से 12 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसके बाद हम फिनिश अटेम्प्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। सभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसके बाद आपको करना है सबमिट ऑल एंड फिनिश। इसके बाद आपको करना है सबमिट ऑल एंड फिनिश। यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर दिया हुआ है 14 अबव 14। ठीक है, अब इसमें से अगर आपका स्कोर यहाँ पर कम होता है, यानी कि कुछ 12 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर मेंशन किया गया ग्रेड टू पास 10 आपके सही होने चाहिए 14 में से। अगर इससे कम स्कोर आपका होता है 10 या 10 से कम होता है तो आप उसको री अटेम्प्ट क्विज पे क्लिक करके दोबारा से इस क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इजीली प्राप्त हो जाएगा।
इसके बाद आप जो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट था, यहाँ सर्टिफिकेट के बटन पे क्लिक करना, ठीक है, सर्टिफिकेट, और नीचे यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कोर्स था, साइबर हाइजीन प्रैक्टिस पर्सनल डिजिटल डिवाइस। और इसके जो अदर कोर्स है जैसे कैरियर एक्शन रिसर्च, इन सब की वीडियो जो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं और से सबको चेक कर सकते हैं। अभी जो क्विज हमें चली है साइबर स्पेस में सुरक्षा, सेफ्टी इन साइबर स्पेस, उनकी वीडियोज भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। कोर्स को कैसे ओपन करें इसका भी आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।